Let's see this question. This is the previous year question, and it says that production of iron in blast furnace follows the following equation. When 4.640 kg of Fe3O4 and 2.520 kg of CO are allowed to react, then the amount of iron produced is. तो आपको ये कोई रिएक्शन गिवन है जिसमें आपको ये इसका अमाउंट गिवन है और इसका अमाउंट गिवन है. आपको इन दोनों की हेल्प से बताना है कि कितना आयरन आपका फॉर्म होगा. राइट. सो लेट्स फर्स्टली डिस्कस द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज actually based on limiting reagent. लिमिटिंग रिएजेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आपके रिएक्शन के टाइम पे कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है. ठीक है. तो इसके बेसिस पे वी विल सॉल्व आवर क्वेश्चन. इक्वेशन इज Fe3O4 plus carbon monoxide. It gives iron. And then carbon dioxide. Right. So this is a balanced equation. Now you have been provided with the mass of Fe3O4, 4.640 kg, 4.640 kg, and for carbon monoxide you are having 2.520 kg. Let's firstly calculate the number of moles. So moles will be, for this we have to calculate the molar mass, right? Fe3O4 का molar mass क्या होगा? आयरन के लिए 56 इंटू 3 प्लस 16 इंटू 4. It will come out to be 232 gram per mole. So for mole, 4.640 into 10 raised to the power 3 because it is in kg. और आपको किस में calculate करना है? In the grams. And then the molar mass is 232. Right. Now for carbon monoxide, it will be 2.520 into 1000. And then carbon monoxide का molar mass, it will be 12 plus 16. That means 28. Now, on calculating, the number of moles will be this will come out to be 20 moles and this will be 90 moles. Right. अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? लिमिटिंग रिएजेंट. And for limiting reagent, you have to divide number of moles by stoichiometric coefficient. So 20 moles and then stoichiometric coefficient is 1. Further, for carbon monoxide, number of moles is 90 and stoichiometric coefficient is 4. So here 20 and here you will get 22.5. Now this value is lesser. जो वैल्यू लेस होती है वो आपका क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट. So this is your limiting reagent. Less value, that means limiting reagent. Right. तो आप इसके बेसिस से बताओगे कि आपका क्या कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है वो कितने अमाउंट में होगा. So according to stoichiometry, if 1 mole of Fe3O4 produces 3 moles of iron, right?
बट हमें किसके लिए कैलकुलेट करना है? फॉर द 20 मोल्स. So for 20 moles of Fe3O4, it will produce iron equal to 60 moles of iron. But since you have to calculate the mass, so for that you have to multiply by molecular weight, and it will come out to be 3360 grams. That means option C is your correct answer.